काय बोलणं झालं हे थांबे हे सेट झालं का रे हे सेट झालं का सर आलं ना सर आज अजित पवारांची भेट घेतली बीड आणि मराठवाड्यामध्ये झालेल्या पतसंस्थेच्या घोटाळ्याच्या संदर्भात राधा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह युनियन त्याच्याच बरोबर जिजाऊ त्या परळीची एक बँक आहे राजस्थानी मल्टी स्टेट आणि इतर काही जिजाऊ इतर मल्टी स्टेट या सर्व मल्टी स्टेट मधून 16 लाख सभासद हे मराठवाड्यातले आहेत एकट्या बीड जिल्ह्यातले 1.25 लाख आहेत जामखेड या गावी एक शाखा होती जामखेड तिथले सुद्धा मोठ्या प्रमाणावरती सभासद आहेत ज्यांचे पैसे बुडालेले आहेत हे पैसे बुडालेले जे आहेत याच्यामधला मार्ग काढला पाहिजे केंद्र सरकारशी बोललं पाहिजे आणि एक बैठक इथे लावली गेली पाहिजे यासाठी ही मागणी घेऊन मी तिथे आलोय जवळपास 26 लोकांच्या आत्महत्या या प्रकरणामध्ये झालेल्या आहेत बीड मधला एक युवक त्याने बिंदुसरा तलावामध्ये स्वतः बळी पडलेला आहे त्यामुळं याची तातडीने बैठक घ्यावी अशा प्रकारची विनंती करण्यासाठी अजितदादांकडे मी आलो या सगळ्या पतसंस्थेच्या घोटाळ्यामध्ये धनंजय मुंडे किंवा वाल्मिकी यांचा सहभाग आहे का या सगळ्यांचा सहभाग आहे का हिंदी में जानना चाहिए हिंदी में 8 बजे काही मल्टीस्टेट बँक पतसंस्थांबद्दलच्या प्रकरणांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी बोलण्यासाठी आपण आलेलो होतो अजित पवारांकडे अर्थ खातं देखील आहे आणि त्यामुळे या संदर्भात आपण त्यांच्याशी बोलण्यासाठी आलेलो होतो अशी माहिती सुरेश धस यांनी दिलेली आहे मात्र बीड प्रकरणी किंवा धनंजय मुंडे प्रकरणी त्यांच्यात काही बोलणं झालं का याबद्दल काहीही बोलणं त्यांनी टाळलंय रात्री 8 वाजता आपण बोलू असं धस यांनी सूचक विधान केलेलं आहे पुन्हा एकदा धस बोलतायत कोऑपरेटिव यूनियन जिजाऊ कोऑपरेटिव यूनियन राजस्थानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन ये जो हमारे मराठवाड़ा के अंदर 16 लाख सभासद हैं जिनके पैसे अटके हुए हैं उनमें से 16 लाख में से 1.25 लाख जो पीपल्स है वो ओनली बीड डिस्ट्रिक्ट के हैं बाकी सब मराठवाड़ा के हैं और एक जामखेड़ पास का जो मतदार संघ है उसका एक तालुका है जामखेड़ में भी एक ज्ञान राधा की शाखा थी उसके भी बहुत सारे 200 या 300 करोड़ वहाँ पे अटके हुए हैं ये जो पैसा अटका हुआ है इसकी वजह से 16 लाख लोगों का पैसा अटका हुआ है 5,500 करोड़ या 6,000 करोड़ तक इसकी राशि जाएंगी कम से कम तकरीबन 26 लोगों ने आत्महत्याएं की है और इसकी वजह से जो बेहाल हो चुके हैं जो भी इसमें लोगों ने पैसा अटका हुआ है वो सब के सब बहुत सारे आंदोलन वगैरह करके थक चुके हैं और कुछ लोग ऊपर भी जा चुके हैं इसके बारे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो उन्होंने मुझे आश्वासित किया है अजित दादा ने कि केंद्र सरकार को जाके मैं ये बताता हूँ और मैं अभी सीएम साहब से भी मिलने जाने वाला हूँ सीएम साहब बहुत बड़ा मराठवाड़ा बहुत बड़ा बवाल इसकी वजह से हुआ है कुछ अधिकारियों ने बीच में पैसा खा के कुछ अधिकारियों पर रेड पड़ी है तो उसके पास 1.25 करोड़ रुपए मिले हैं एसीबी के रेड में ऐसे कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा खा के इसको इन्वेस्टिगेशन अच्छा करना चाहिए था वो इन्वेस्टिगेशन अच्छा नहीं किया है उनके ऊपर भी तुरंत कार्रवाई हो और लोगों को इससे से जल्द जो भी यहाँ के गुंतवणूकदार हैं जो भी यहाँ के पैसे रखने वाले हैं
उनको जल्द से जल्द राहत मिलनी चाहिए। जज साहब, सवाल यह है कि संतोष देशमुख के मामले में आका की कंप्लेंट आपने की है क्या, उस बारे में बात हुई क्या? एक मिनट, उसके बारे में मैं 8 बजे बोलूंगा, 8:30। लेकिन अभी दादा ने कोई बात छेड़ी, दादा ने कुछ, आपने दादा के ऊपर भी आपने कुछ कहा था, उसके एक पार्टी में नाराजगी थी। दादा के ऊपर आपने जो कमेंट किया था, नहीं सर सुनिए ना, है क्या? नहीं दादा के तरीका है क्या? ये आप सीनियर मोस्ट ये है, नहीं, लेकिन मैंने विनती है मेरी, मैंने जितना कहना चाहता कहा, मराठी में जितना कहना चाहता था कहा, थोड़ा प्लीज। नहीं, लेकिन इट्स नॉट गुड, प्लीज। तेव्हा मराठवाड्यातील मल्टीस्टेट बँक पतसंस्थांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी फक्त आपण अजित पवारांशी बोललो आणि बीड प्रकरणी आपण रात्री 8 वाजता बोलू असं सूचक विधान सुरेश धस यांनी केलं आणि त्यांनी काही अतिरिक्त बोलणं आत्ता तरी टाळलेलं आहे। अर्थ खातं अजित पवारांकडे आहे, त्यामुळे मराठवाड्यातील पतसंस्थांचे जे गैरप्रकार सध्या सुरू आहेत, गैरव्यवहार, हा गैरव्यवहार जवळपास 6,000 कोटींचा आहे असा आरोप सुरेश धस यांनी केलाय। 16 लाख लोकांचे पैसे यात अडकलेले आहेत वेगवेगळ्या पतसंस्थांमध्ये आणि आतापर्यंत 26 लोकांनी आत्महत्या केल्या आहेत आणि म्हणून हे प्रकरणाचं गांभीर्य पोहोचवण्यासाठी आपण अर्थमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतल्याचं धस म्हणाले। मात्र बीड प्रकरणावरती त्यांनी काहीही बोलणं सध्या टाळलंय।